Hello students, welcome to Dhal sir classes. Previous lecture we started with M.N. Srinivas. So I'm continuing the M.N. Srinivas ideas. Basically, his contributions are also important with respect to book view and field view. Srinivas has this approach to understand that how one side when he talks about book view, जब वो book view या जिसको आप कहते हो टेक्स्ट के अप्रोच में जिस रिलीजियस लिटरेचर या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम इंडियन सोसाइटी को समझते हैं एंड दूसरी तरीके से जब हम फील्ड वर्क करते हैं या रिसर्च या एथनोग्राफिक वर्क कंटेक्स्ट में या इन डेप्थ फील्ड वर्क के माध्यम से समझते हैं सो ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी तो वन साइड देयर इज ए बुक व्यू जिसको हम लिटरेचर टेक्स्ट या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मानते हैं और अनदर साइड which is our in-depth field work. So why both are important? Because to understand the idea of Indian society, both are claiming and different ways to give the importance that how the Indian society and Indian people lives is a relationship with the areas, the different norms, different behavior, and different rulers in those who are part of the Indian society, even colonial period or even before colonial period. So जब dominant caste की बात करते हैं, then how the idea of norms and normative codes of behavior भी important माना जाता है when M.N. Srinivas idea of rural India या rural areas. Again, also he gives focus to that how the cultural diversity exist in different regions, but also different caste and ethnic groups. एक तो कल्चरल की जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो वेराइटीज की बात करते हैं, तो डिफरेंट रीजन्स या जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं और दूसरा विद इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी और कास्ट के साथ भी ये डाइवर्सिटी है. सो दैट मीन्स यू फाइंड there is a book view of about society and there is a field view of society and there are difference and that significant gap is important to understand the idea of M.N. Srinivas why became important. तो इस जगह पे श्रीनिवास की जो सिग्निफिकेंट स्टडी है जब फील्ड व्यू की बात करके इंडियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं या कल्चर के बारे में बात करते हैं एंड देन द बुक व्यू जब डोमोज लुई डोमो की होमो हायरार्कीज पढ़ते हैं जो एक बुक व्यू के तरीके से कास्ट के बारे में बताते हैं सो दैट मीन्स one idea, the idea of caste is derived from our manusmriti or Indological perspective. Another idea about whether it is dominant caste or Sanskritization or caste diversity that is part of our field work. So that means somewhere the book view became important and somewhere the field view became important. तो जितने भी लिटरेचर को कल्चरल स्टडीज को और जितने भी टेक्स्ट को इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इंडियन सोसाइटी को जानते हैं वो भी उनकी नजरिया एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी वेयर इज देयर आर फील्ड वर्कर्स लाइक M.N. Srinivas और दोज हु हैव डन फील्ड वर्क लाइक Malinowski और Redcliffe Brown वो जब फील्ड की बात करते हैं देन यू फाइंड देयर इज ए गैप दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. श्रीनिवास की जो व्यूज हम कास्ट के बारे में जाति के बारे में बात करते हैं सो रामपुरा की बात करते हैं रामपुरा विलेज या रामपुरा हमलेट सो दैट वन विलेज गिव्स ए डाइवर्सिफाइड illustration about the social aspect of caste and other issues and that has a significance to understand the subcontinent. पूरी भारतवर्ष भारत के जो बड़े पाइमा में जब समझते हैं भारत को जब हम रामपुरा की स्टडी एक गांव की स्टडी देख के हम भारत के और भारत से बड़े लेवल पे देखते हैं तो कास्ट की बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस एक रिलेशंस को पता चल जाता है दैट हाउ कास्ट बिकेम एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. डूमो की व्यूज जब कास्ट के बारे में बात करते हैं सो देयर इज ए वेस्टर्न व्यू टू अंडरस्टैंड द कास्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन. सो कास्ट खाली वेस्टर्न व्यूज नहीं है कास्ट को हम इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिजिनस पर्सपेक्टिव में भी हम M.N. Srinivas की पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं. सो दैट मीन्स कास्ट हायरार्की इज नॉट अबाउट ओनली वन वे टू अंडरस्टैंड द idea of Louis Dumont, but at the same time, that the idea of field view or to understand the diversification, the dominant caste, the Sanskritization, all also part of
the field view of Srinivas study. Historically, you find that how caste became an important dimensions, and the members of different caste also to understand with respect to many things. So caste simply एक category नहीं है to understand the hierarchy or diversification, but also it has a relationship with different services, different commodities, different groups, so different conflict. So रामपुरा की स्टडी को हम सिर्फ एक कास्ट से जोड़ नहीं रहे हैं, बट इट हैज ए रिलेशनशिप विथ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ द विलेज. तो यहाँ पे कास्ट सिंपली प्यूरिटी, प्यूलिशन, प्योर इम्प्योर, रॉ एंड पक्का की बात नहीं हो रहा है, बट इट हैज ए रिलेशनशिप विथ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोजीशंस. जब ब्राह्मण्स और लिंगायत की बात करते हैं, सो दे बिकेम द डोमिनेंट कास्ट, but they have a relationship with the Sudra Varna, but the idea of Brahmins and Lingayats became the dominant because of the criteria given by the idea of Srinivas, that how they became dominant. It is had some criteria of the dominance because of the numerical, because of the economic and political power, because of the positions in local situations. So local high caste hierarchy में इनकी position dominant है, higher है, powerful है, politically, economically they are affluent है. So that became the idea of the dominant caste part of the caste reality according to M.N. Srinivas. Again, when he studied about the educated males and their professions, so that became another way of understanding the dominance. Also, the English education, Western or education, so that parts of the Western influence also one criteria to understand the dominant caste features. So इसका मतलब ये हुआ, हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जब उसकी एजुकेशन को देखते हैं, इंग्लिश एजुकेशन, उनकी प्रोफेशन की बात करते हैं, वन वे द कास्ट इज डोमिनेंट इन दैट वे. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनकी नंबर, इनकी रिचुअल्स, इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पावर, इस चीज को देख के हम डोमिनेंस की बात करते हैं. सो दैट मीन्स द डोमिनेंट कास्ट इज नॉट सिंपली अबाउट one way to understand, but it has a relationship with the way it is derived not only from one village, but it has a higher significance also other villages. But यहाँ पे dominant caste is not about only the higher caste, so-called means only Lingayat or Brahmins, but there are also other castes which are not Brahmins or not about higher caste in south, but in north also some different caste group also. So they became dominant because of other criteria like economic, political power, or the Western education, or it is about their profession. That means यहाँ पे जब एम.एन. श्रीनिवास की बात करते हैं, the people in the village with low position, but they have a higher position in terms of the local hierarchy. तो इसका मतलब आपकी कास्ट के हिसाब से अगर आपने हायर हायरार्की में बिलोंग करते हैं, so that becomes the caste important, how it becomes the dominant. So people of the ruling caste reveal in social security because they know they will not be humiliated or insulted by those who are ritually superior to them. So यहाँ पे ruling caste जो होते हैं, तो social hierarchy में they are not going to be part of the discriminations. So that means their position is important to understand that how caste became one of the way to understand the local conditions of their village. The study of the local dominant caste or the kind of dominance is also critical to understand the rural society. तो ये जो diversified conditions को देखते हैं dominant caste को और इसकी जो dominance है जो रूरल सोसाइटी में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चारों कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, रिचुअल स्टेटस एंड वेस्टर्न एजुकेशन ऑक्यूपेशन, ये सारे क्राइटेरिया में देखते हैं, ना कि एक स्पेसिफिक कास्ट को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट स्टेट में देखते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डोमिनेंसी not only about the name of the caste or the higher caste, but it is important also to understand their numerical strength, मतलब संख्या में ज्यादा हो, पर आर्थिक और राजनीति में उनकी
पोजीशंस मजबूत हो, हायर रिचुअल स्टेटस हो और वेस्टर्न एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के साथ इनकी पहचान हो. So this is another important dimensions to understand the idea of M.N. Srinivas. We'll continue M.N. Srinivas in the next lecture. Thank you so much for watching Dhal Sir classes.